Hello everyone. For the preparation of 24 ICSE 10th examinations, we are posting videos for the concise maths syllabus one by one. All these videos are free to use. We are the channel of AB Coaching. Subscribe the channel please. We have already posted the entire playlist for coordinate geometry. Here in our second playlist, we are going to post all the videos regarding preparation and tools and tricks of solving the questions of trigonometry and heights and distances. So I hope you are using those previous videos. So here we start today the next playlist, and we get the videos one by one. They might be for trigonometry and they might be for heights and distance. This chapter, it's new for everyone because we have a little idea about trigonometry in class 9, but it is not very clear how to apply trigonometry and what are the trigonometric identities and this proving. So this next videos, the next playlist will be for trigonometry, height and distance, and trigonometric INTs. कंसाइज बुक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करते हैं. Try to take these videos, subscribe the channel, and like the videos also. So and please keep the update of the videos on your phone on, so that you will know every time we post the videos. It will put a message on your screen that the new video has been posted, and you can always see to that videos. Videos are free to use on our channel. Subscribe the channel so that you may have a free material available for the studies of concise book ICSE 10. We are very specific for these this kind of preparation. So our purpose is to post videos for 2024 ICSE exam preparation. I am posting new playlist for heights and distance. Let us understand what do we mean in this chapter and how do we apply trigonometry in this chapter, what we do with this chapter, and all these things. So first of all, understand that it is a practical applications of trigonometrical identities. Practical application, हम trigonometry को use कर रहे हैं distances calculate करने के लिए, height calculate करने के लिए. हमको हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी आर नॉट एट द सेम एल्टीट्यूड. वी आर ऑब्जर्विंग अ फ्लाइंग बर्ड, वी आर ऑब्जर्विंग अ बिल्डिंग, वी आर ऑब्जर्विंग अ रोड, a car moving on the road from our rooftop, and all these things, how the angle changes, what is angle of elevations, what are angle of depressions, all these things are going to be used in this chapter. So before we going on with this chapter, you should know about the trigonometric ratios, tan theta, cos theta, and sine theta, and few values of standard angles. Tan, I'll tell you later on in the second slide, tan 45, tan 60, and tan 30. Similarly, sine 30, 60, 45, and cos 30, 45, and 60 values. I generally find that these values are sufficient for your exam preparation. So first of all, I take it case by case. Understand the first case, a man is standing on the ground and he's observing an object at some height, say the rooftop, such that the rooftop is h meter high. The man is standing at the x meter from the foot of the roof, the building on the ground. Now see what is happening here is that when man observes the top, his eyes makes an angle with the horizontal. So if you see my eyes in this, so if I'm watching the fan on my roof, I'm watching the bulb, I'm watching a flying bird in the sky, I always have to see up, and that makes that there is an angle formed between the horizontal and my eyes observe article. So जो line observer and observe person को ज्वाइन करती है, और जितना एंगल वो लाइन बनाती है हॉरिजॉन्टल से, उसको ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है. So ये angle of elevation है. We come back to the second case. Now second case is for
Suppose a man is standing at some altitude, and you see that the man is observing from here. This is the observer. From here, an article on the ground, and this man is making an angle theta with the horizontal while observing this here. So मैं अपने घर की छत पर खड़ा होकर एक रोड पर कार मूव कर रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं. तो माई आईज आर मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. आई एम लुकिंग डाउन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है. ये हाइट है, ये distances हैं. I'm not talking about distance and height right now. I'm just talking about the angles. Now, this angle is always alternate with this angle. So, ultimately, जो angle of depression बनता है, वो यहाँ पर लौट के आ जाता है, and we get the angle on the ground. And so, that is how we have these two angles. Carefully, we should understand them: angle of elevation and angle of depression. I hope you understand both these points. Now in these questions जो सबसे important point है आपके लिए वो है कि आप कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं. आपको क्वेश्चन को पढ़कर एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. It might involve two triangles, one triangle, whatever, but you need to have these two triangles, the diagram drawn for every question. तो जो मेन प्रैक्टिस करनी है आपको वो डायग्राम ड्रॉ करने की करनी है. डायग्राम ड्रॉइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी भी और ट्रिक को सीखने की. तो पहले हमको ये देखना है कि क्या हम डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम डायग्राम ढंग से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ही हम फिर आगे की बात सोच सकते हैं. सो आई हैव this diagrams given to me and I'm drawing the diagram. Let us understand what kind of diagrams do we have generally in these questions. I'm giving you three cases for them. Please understand and try to use this concept in making the diagrams further in the question. So a man is observing a bird sitting on a tree. Now you can see that what is now say man is observing it from here and the distance is I don't know what. Now the second point of the line is that, so the question is reading like this: a man observes a angle at a man observes a top of the tree such that he is standing on the ground, or an angle of elevation is 30 degree. Now the second line from here moves that the man moves towards the base by 20 meter so that the angle changes to 45 degree. This angle is 90, always perpendicular है ground के ऊपर. तो जब कोई मैन परपेंडिकुलर के पास में मूव करता है तो हमेशा एंगल ग्रेटर होता है, और जब कोई मैन अपनी प्रेजेंट पोजीशन से दूर जाता है, रिट्रीट बैक, मूव्स बैक, हमेशा एंगल छोटा होता है. So here we have got angles 30 and 45. This distance is x. Find the height of tree and the distance between these two things. So हमको x निकालना है, हमको h निकालना है. ये सब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू से ही होता रहता है. That is how we find the values of angles in this case. I hope you understand this, everyone. The second case I would suggest you is please understand diagram carefully. I'm adding language for this. A man is standing on the ground observing the top of the building such that the angle of elevation is 60 degree. The man moves back. The man moves back. How much moves back? Say 30 meters such that the angle changes to 45. Now he is moving back. Angle is decreasing when he moves back from that point.
So you got this angle of 45. So that's how the diagram is drawn. So the question says a man observed the top of the building on the ground at some point on the ground such that angle of elevation is 60 degree. Man retreats back, man moves back 30 meters on the ground so that the angle of elevation changes to 45 degree. Now the difference you can understand, when man was moving towards the tower, the angle was increasing. When man moves away, the angle must decrease. Now 30 meters is the distance between the original and the final position. Always remember these 2 points. The third case which man can make is a man observed the top of the building from the ground such that angle of elevation is 45. Now he is moving vertically. He's moving vertically upward. Now he moves vertically upward by 30 meter such that the angle of elevation changes to 30 degree. So you got two angles here, the 45 and 30 degree. The angle changes to 30 degree when he moves up by 30 meters. And you can have the third type of diagram. So mankind moves towards the tower, away from tower, and it also moves vertically up. It does not move vertically down. It can't go inside the ground. It moves vertically up by 30 meter. So it moves vertically up by 30 meter. So the angle changes to 30 degree from 45. And we have many questions like this, which have the questions on these three diagrams. Please try to understand these diagrams are very important. आपको इन डायग्राम्स को यूज करके बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. Apart from that, if I add something more, we use the value of 10, 30 and 45 and 60. It is 1 by root 3. It is 1. It is root 3. Sine 30 is 1 upon 2. 45 is 1 upon root 2. 60 is root 3 by 2. Same for we use the value for cos. Cos 30 is root 3 by 2. Cos 45 is 1 by root 2. Cos 60 is 1 by 2. So please learn these values. Apart from that, if the values in the question comes up in degrees and minutes, 32 degree, 25 minutes, 24 minutes, आपको बोर्ड के एग्जाम में टेबल प्रोवाइड करी जाती है. आपको टेबल देखना आना चाहिए कि हम कैसे उस टेबल की हेल्प से उन डिग्रीज की वैल्यू निकाल सकते हैं जो डिग्रीज और मिनट में होते हैं या डिग्रीज और सेकंड्स में होते हैं. आई टेल यू लेटर ऑन कि हाउ वी डू दैट, how do you find the angles from the table. Anyway, so I hope that this question chapter is not very theory intensive. It's all in the question. Questions are very versatile and you got different questions every time. Every question has got different method of solving, so you must solve all the questions. This question comes in section B of 4 mark. See, sometimes it is attached along with the question of OZ of 6 mark of statistics. So now statistics is a very easy topic. तो वो 6 मार्क का क्वेश्चन खराब हो जाएगा अगर आप इस टॉपिक को ढंग से डिस्कस या प्रिपेयर नहीं करेंगे. सो बाकी टॉपिक को ठीक करने के लिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो दे ऑलवेज मेक अ मिक्स ऑफ वन डिफिकल्ट एंड वन इजी क्वेश्चन. एनी वे और अदर आईसीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन आप कोई भी टॉपिक को अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं. चैप्टर की इंपॉर्टेंस किसी की दूसरे से ज्यादा या दूसरे से कम नहीं है. They all have equal type of importance. Anyway, I'm starting the solving questions one by one. Please keep a note of these questions. Diagram को जरूर बनाना है. The height of tree is root 3 times the length of shadow. I told you earlier, shadow is now. So understand this point, please. Here, shadow, trees, pole, standing man,
buildings, towers, they all are base. They all are perpendicular to the ground. They all make angle of 90 degree on the ground. The shadows, shadow is not there. The shadow is always base. The strings, the wires, they all are the hypotenuse. The string of the kite, the wire on a pole from the ground, they all are inclined to the ground, and they all are taken to be the hypotenuse of the triangle. So I hope that helps a lot. So you can see that the uh, height of shadow and height of tree. So we are getting a relation between the perpendicular and the base. The height of tree is root 3 times the value of the length of shadow. तो आप shadow को h मान लीजिए और hypotenuse को root 3 h मान लीजिए. ये angle theta है. So what do we have here? Now you see perpendicular and base are involved. That means I have to use perpendicular upon base. Tan theta equals to root 3. Remember the values. Theta equals to 60 degree. This angle is acting as angle of sun. Say sun is here. Alright, this angle makes the value of angle of elevation of sun, because that is how the sun is making the shadows on the ground. Angle of elevation of top the tower from a point on the ground and a distance of 160 meter from the foot is found to be 60 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. So that क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. The angle of elevation of the top of the tower से एक perpendicular बना लीजिए. From a point on the ground at a distance of 160 meter is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Perpendicular and base are involved. Tan 60 equals to h upon 160. Root 3 equals to, so height equals to 160 root 3. This value is 160 root 3 meters. I hope you understand that the very basic of all the questions I'm taking right now. Now always understand the ladders are basically the hypotenuse. Ladders are placed against the wall such that the upper end reaches against the vertical wall. The foot of ladder is 2.4 meter from the wall, and the ladder is at an angle of 68 degree with the ground. Find the height up to which ladder is reaching the wall. क्या फाइंड करना है हमको? Perpendicular. Again the same thing. Tan 68 equals to h upon 24. So h equals to 2.4 into tan 68. We need to find the value of tan 68 from the table. So in your concise book, at the end of the table, at the end of the book, you basically, if you see there's a table given to you for natural logarithms, natural sines and natural tangents. आप उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको ध्यान से देखिए. उसमें आपको वैल्यूज मिलेंगी जो कि हमको वैल्यूज दे रही हैं उन एंगल्स की जो डिग्रीज और मिनट में है. तो दिस इज 2.4
into 2.475. Now I need to multiply 2.4 into 2.475, which gives me 5.94 meters. That is the total height of an object. So that's how we can find the value of angle from the table. Tan 68 is basically giving us the value of tangent of angle. So अपनी टेबल बुक के लिए एंड में जाइए, टेंजेंट की टेबल खोलिए, वहां पर देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एंगल 68 आएगा। 68 की वैल्यू 0 डिग्री में देखिए, आपको मिलेगा 2.475. So and multiplied by value of height, that gives you the simple value of the height of the top, height through which the ladder is reaching the wall. Two men are standing on the opposite sides of a tower. They observe the angle on the opposite the elevation of top the tower to be 30 and 38. Two persons standing, तो सबसे पहले बनाएंगे हम टॉवर बनाएंगे। दोनों लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं on the either side of the tower and they both are observing the angle of elevations are 30 and 38. You can make any angle on any side and the height of tower is 50. These are angles of, okay, so tan 30 is speed is 50 root 3. You can multiply 50 by 1.732. It gives me 86.6 meters. For second triangle, I've got the value of BD from here, right? And now I'm going to find the value of CD here onward. So tan 38 equals to perpendicular upon base. The value of tan 38, is 0.7812. So I got y equals to 50 upon 0.7812. लास्ट पेज ऑफ टेबल पर 38 का 0 कॉलम में वैल्यू निकालिए, आपको मिलेगी वैल्यू 0.7812. आपको डिवाइड करना है 50 से 0.7812 से, दैट गिव्स यू 64, approximately 64 meters. So total distance BC is 86.6 plus 64 meters. So what I got as the answer is 150.60 meters. ये B और C के बीच का डिस्टेंस हो जाता है, जो कि बिल्डिंग के दोनों तरफ खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। A kite is attached to a string, so the string is hypotenuse. And its length is 60. Sorry, height of kite is always perpendicular, always altitudes perpendicular on the base, and the string makes an angle of 30 degree with the ground. I hope you understand this. Now you need to find the value of length of the string. So the perpendicular or hypotenuse involved here, I have only one ratio for that, that is sine theta is perpendicular upon hypotenuse. Sine 30 equals to 60 upon AC. It is 1 upon 2 equal to 60 upon AC. AC equals to 120 मीटर। स्ट्रिंग की हाइट 120 मीटर होती है। जब कभी भी एंगल 30 का होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा
परपेंडिकुलर का डबल होगा। याद रखिए, जब कभी भी एंगल 30 का होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का डबल होगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को, काम आएगा बाद में। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टेक्स एंगल इज 30 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में अगर, सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर की वैल्यू की डबल होगी। इट मेक्स योर 1 markers easy with such kind of short tricks. A boy 1.6 meter tall is 20 meter away from tower and observe the angle of elevation of top the tower to be 45. What is the difference in this question? बॉय की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 20 meter away from the tower, observes the angle of elevation to be 45. लेबलिंग करिए हमेशा डायग्राम की। डायग्राम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज क्वेश्चंस। आपको टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, perpendiculars make the equal value. This height is 1.6 and this is also 20 meter in triangle AEB. Tan 45 upon BE. So I got AB equals to 20 meters. I hope बच्चों सुनना आ रहा है, and I'm trying to make it as simple as possible. So I got the value of AB as 20 meter, total height of building AB plus BC 20 plus 1.6 is 21 meters, 21.6 meters. Now, same we'll do with the angle 60. We'll simply change the angle 45 with 60. That gives me root 3 here, and I got the value of AB as 20 root 3. 20 root 3 को root 3 लगाइए 1.732 और वैल्यू निकालिए 2034 point something plus 1.6. The same kind of approach, the angle might be different. Always remember this. Question number 7. So, a little different question, so you must read the question carefully. It's the complete tree and tree is broken from here. So this portion is now actually here. The part of a tree broken over by the wind makes an angle of 45 with the ground. और वो जो पेड़ था जो टूट के नीचे आया उसने ग्राउंड से बनाया एंगल 45 का। And distance from the root to the point where top of the tree touches the ground is 15 meters. अब सब पता लग गया हमको भाई। क्वेश्चन बहुत इजी है, ढंग से क्वेश्चन पर फोकस करिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे इन चीजों में उतना आपको बाद में कंफर्टेबल रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, चीजों को ढंग से नहीं करते हैं, हाफ हार्टेडली चीजों को कर लेते हैं। जब आप पहली बार चैप्टर सॉल्व करते हैं उसको बिल्कुल उसकी रूट तक सॉल्व करिए। एवरीथिंग यू शुड फाइंड आउट अबाउट दिस चैप्टर। सेकेंड टाइम कम करिए, थर्ड टाइम पे दोबारा और कम करिए, लेकिन फर्स्ट टाइम जब उल्टा मत करिए। फर्स्ट टाइम बिल्कुल डीपली चैप्टर को सॉल्व करिए। रिवाइज करें तो कम कर दीजिए, हल्के हल्के कम करते जाइए। एनीवे, सो दे आस्किंग द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। उसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, एक पार्ट एक्स है, एक पार्ट वाई। ये टोटल ट्री था। जब मुझको वाई निकालना है तो फिर हम ट्राइंगल BDC लेंगे। BD is equals to BC was angle is 45। जिस ट्राइंगल में वर्टिस एंगल्स 45 के होते हैं वो ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है।
तो ये 15 मीटर का हो गया। हमको क्या निकालना है? AC। I can't find AC directly. What should I do? I should find the value of DC. So perpendicular मालूम है, बेस हाइपोटेन्यूज निकालना है। कॉस यूज होगा या साइन यूज होगा? Sin 45 equals to perpendicular upon hypotenuse. So DC equals to 15 root 2. So we should find the value of 15 root 2, and that will gives me 15 root 2 is 15 into 1.732. It is 25.98. 15 root 2 is 15 into 1.414 is 21.2 meters. और इस वैल्यू में, इस DC की वैल्यू में आपको ये BC की वैल्यू ऐड करनी है। टोटल हाइट ऑफ ट्री, मुझसे पहले बताइए, सोचिए दिमाग में क्या होगी? BC plus CA and DC is equals to CA. So what is the value of CA? 21.2, and value of BC is 15 meters. 36.2 meter is the final answer of this question. That's how you solve this question. आपने एक बार तो DC फाइंड आउट किया है और एक बार आपने BC फाइंड आउट किया है। DC AC के बराबर है, इसलिए आप AC और BC की वैल्यू को ऐड करके टोटल ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम मूविंग हेड, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव टू बी वेरी थ्रू विद द क्वेश्चंस। सब क्वेश्चन करके देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को अनइम्पॉर्टेंट मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन द बुक। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ टॉपर एंड अनफिनिश्ड टॉवर, सो दिस इज अनफिनिश्ड टॉवर, मतलब टॉवर भी और ऊंची जाएगी। सो टॉवर को और जाना है, उसको और ऊंचा होना है। जब टॉवर अनफिनिश्ड है तो हम उसके बेस से 80 मीटर दूरी की डिस्टेंस से उसके टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिखाई पड़ता है। और जब मैं इसको और ऊंचा बढ़ा दूंगा तो द एंगल ऑफ top of the tower would be becoming 60 degree and the base of 80. And so you see, I need to find how much higher the tower should be raised up. So I should find first of all the initial value, then find the total value, and then find the difference of these two values. So I take first of all triangle ABC, tan 30 equals to BC upon AB, and what is AB here? 80, so BC is 80 upon root 3 meters. हम बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। Then I take the triangle ADB, the complete triangle, tan 60 equals to, it is root 3, so DB is 80 root 3. I need to find the value of CD. The CD would be given by BD minus BC. 80 by root 3 minus 80 into root 3. I have the wrong value. 80 root 3 minus 80 by root 3. I need to find this value. So what can I do here is I can take LCM here. Now don't try to divide 80 by root 3. That will be a disastrous thing you should do. So you got 80 into, it's got 240 minus 80 upon root 3. That gives you outrightly 160 by root 3. Now rationalize it. We got 160 root 3 upon 3 as the answer
So how much high the building should be raised? It should be raised by 160 root 3 upon 3. I hope the question is clear. You can multiply 760 by root 3. अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन में लिखकर आता है कि आप अपना आंसर को डेसिमल के पॉइंट्स में लिखिए, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करिए रूट 3 से और उस पूरे को 3 से डिवाइड करिए. That will give you the exact answers in the board exam. I hope I should move ahead with this question. At a particular time, when sun's altitude, the second name of angle of elevation. The shadow of vertical tower is 45. Basic question. Tan 30 equals to h upon 45. It is 45 into 1 upon root 3 equals to h multiply divided by root 3 upon root 3. You have the answer 15 into root 3 meters. That would give you the height of the tower. They say that the length of shadow of the same tower when altitude is 45. Now the question is reversed now. Once I've got that value of height of the tower, I'm trying to find different values of shadows at different angles or suns. I take one of them. So altitude is 15 root 3 and angle is 45. Tan 45 equals to perpendicular upon base. BC is 15 root 3. Value of BC is 15 root 3. Value of AB is also 15. When altitude of sun is 45, the length of shadow would be 15 root 3 meters. I hope you understand and try it with 60-degree angle. टॉवर की हाइट तो 15 रूट 3 ही रहेगी, केवल शेडो की हाइट चेंज हो जाएगी अगर एंगल चेंज हो. तो वी राइट रूट 3 हियर. आई थिंक द आंसर वुड बी 15 meters in that case when angle is 60. I hope you understand. As the angle of elevation increases, the shadows की जो लेंथ है वो shortened होती जाती है. याद रखिए, the angle decreases, the angle gets decreases, sun gets settled down, shadows gets longer. This give you an idea in your mind about this question. The 10th question, two vertical poles are on the either side of a road. A 30-meter long ladder is placed between the two poles. हम एक लैडर लेते हैं जो 30 मीटर की है और उसको हम इन दोनों पोल्स के बीच में रोड पर कहीं पर भी सेटल कर देते हैं. एंड आई एम ज्वाइनिंग one line here and one line here. When ladder rests against one pole, it makes an angle with the pole. So this angle is with the pole. Please understand that. And when it is taken from here and taken to the next pole, the angle is with the ground. ये इन दोनों चीजों का डिफरेंस है. The ladder is 30 meter, it will remain 30 meter to take it wherever. Asking the width of the road. इसको x और इसको y मान लीजिए. मुझको एक बार तो x निकालना है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है और दूसरी बार फिर से इस बार मुझको ये एंगल गिवन है
एंड देन दैट मीन्स ये बेस है। ये एक बहुत कंसेप्चुअल बात है जो हम जनरली मिस कर जाते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आई हैव टू पॉइंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इन ट्राइंगल ABC, you'll use cos 32 degree 24 minutes is equals to base upon hypotenuse. That is the first one need to solve. So the BC will be equals to 30 into cos 32 degree 24 minutes. आपको अपनी टेबल से, मैं इसका सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन खुद ट्राई करिए। टेबल से 32 डिग्री 24 मिनट्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए और 30 से मल्टीप्लाई करिए। जो सेकंड आई एम डूइंग इट हियर, दिस साइड इज एम्प्टी। in triangle DCE, now see the problem here is that angle is here, so I need to use cos. I need to find perpendicular. Should I use cos? I should use sine. Sine theta equals to perpendicular upon EC, DC upon 30. Find the value of DC from here. DC would be basically 30 into sine 32 degree 24 minutes, and you have to add the value of BC and CD to get the total value of the height of the length, the width of the road in this kind of question. So I have solved these first 10 questions of this chapter. Please try to solve them completely. Once you solve them completely, in the next video I'll continue my questions from here onward. And the next exercise is basically involving two triangle questions where the angles are changing, man is moving, rotating back, moving towards the perpendicular and whatever and what not. So पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। And once you solve these questions, फिर हम मैं आपको और आगे की वीडियोस पोस्ट करूंगा। पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में चैप्टर का कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन पहले इजी सॉल्व करिए। बोर्ड्स का एग्जाम आज से करीब 6 मंथ्स के बाद होंगे। टारगेट करिए बोर्ड्स के एग्जाम, मन में ठानिए कि आपको अच्छा करना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस, पढ़ाई की प्रायोरिटी अपने दिमाग में सेट करिए। Be inclined towards books, be inclined towards studies, be in contact with your teachers. Keep on asking them to help you in many other ways except simple classroom teachings. That's how you will be having a benefit of that insight in the studies which other people might not have. टारगेट करिए, अपनी लाइफ को शेड्यूल करिए और सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल कीप ऑन काउंसलिंग यू more and more on these channels. So I always try to help my students to overcome their procrastination, and they always tends to waste time. They always tends not to study properly and regularly. They avoid tests, they ignore testings, and taking tests is the best thing you can do with your studies, because test आपको हमेशा बताते हैं कि आप किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं। टेस्ट अगर आप अच्छे देते हैं, आपके टेस्ट अगर रेगुलरली अच्छे आ रहे होते हैं, तो आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने की हैबिट पड़ती है, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स यू टू स्कोर इन अ बेटर वे। बुक्स को लेकर रखिए संग में अपने, रात को लेट नाइट पढ़ाई करिए, लेट नाइट तक पढ़ाई करिए, एक लॉन्ग सिटिंग्स प्रोवाइड करवाइए। आप जब लॉन्ग सिटिंग्स प्रोवाइड करवाएंगे
तब आपको आउटपुट भी मिलना शुरू हो जाएगा. Anyway, this is for some other time. I will again talk about the method of studying and how to schedule the timetables and all. I will post a video someday on that. For a while, I am taking your off. Please subscribe the channel, see the video, share with your friend, like it, and write the comments on this as well. Thank you very much. Wait for my second video on the same topic, height and distance. Bye bye.